Assalamu alaikum students, this is Shazia Rana, your English teacher and vice principal, and right now the time is 9:50. Today is 21st July and we are going to cover the exercise of the chapter number 7, that is King Faisal. So let me share the screen with you. You can see all the contents through MS Word document. Okay, so now talk about the question number 1 first. When was King Faisal born? We have gone through the topic, we have gone through the chapter, so things should be on our tips. The answer is the late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. He was the second son of King Abdul Aziz ibn Saud. From whom did he receive the religious education? मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने नाना से अपनी religious education हासिल की. King Faisal belonged to a noble and religious family, so he received his religious education from his paternal grandfather, Sheikh Abdullah bin Latif. When was Faisal made the king? King Faisal was made king after the illness of his elder brother, King Saud, in 1964. The Council of Ministers chose him as king because of his wisdom and intelligence. How did Faisal rule Saudi Arabia? Being an able ruler and possessing great qualities of leadership, Saudi Arabia for ruling Saudi Arabia wisely and justly. Saudi Arabia was polished under his rule because of his sincere leadership and love for his country. He did his best for the development of the country. How did he develop his country? Keeping a vast governing experience, Faisal he took all necessary steps. I'm sorry, I'm spelling mistaken. First, he took all necessary steps to develop his country. He spent a lot of money to promote his people and provide the basic amenities of life to the people at their footstep. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर में कि उन्होंने अपनी कंट्रीज को कैसे डेवलप किया. सबसे पहले उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत सा पैसा खर्च किया, जहाँ पर उन्होंने अपने मिनरल ऑयल को एज ए टूल यूज किया. उन्होंने न्यू इंडस्ट्रीज कायम की, दूध, मिल्क इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री एंड सो मेनी अदर्स, which is the main source of income. That is, mineral oil was the main source of income. Vast areas of desert were irrigated and brought under cultivation. बहुत से बड़े इलाके को उन्होंने काश्तकारी के लिए भी इस्तेमाल किया. What were the feelings of King Faisal about Pakistan? King Faisal की पाकिस्तान के लिए क्या feelings थी? King Faisal was a sincere friend and well-wisher of the people of Pakistan. He showed his sincerity on several occasions by providing all-out mental and material support. He felt deeply on the separation of Pakistan. पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा सिंसियर थे और कई मौक़ों पर उन्होंने पाकिस्तान को अपनी खिदमत पेश की. और जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था, तो किंग फैसल ने बहुत ज़्यादा इस बात को फील किया और वो बहुत रंजीदा हुए. Why was King Faisal against the state of Israel? King Faisal was against the state of Israel because of its enmity towards the Arabs. क्योंकि इसराइल अरब से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, इसलिए किंग फैसल उनके बहुत अगेंस्ट थे. In fact, he raised the aggressive designs of European bloc. उन्होंने बहुत सा यूरोपियन ब्लॉक का बहुत सारा एरिया जो है वो अपने टेरिटरी के अंदर कर लिया था. इसराइल की बात कर रहे हैं. That's why he condemned the illegal occupation of Israel. इसी वजह से वो इसराइल के गलत रवैये के लिए बहुत ज़्यादा कंडेम करते थे, उसके अगेंस्ट बात करते थे. He demanded that the previous state of Jerusalem should be restored. वो ये चाहते थे कि यरूशलेम का पुराना स्टेट जो है वो फिर से रिस्टोर हो, to be given under the control of Muslims as a होली इस्लामिक सिटी. यरूशलेम जो है वो इस्लामिक होली इस्लामिक सिटी था जो कि इसराइल के कब्जे में है. वो ये चाहते थे कि यरूशलेम में वापस जो है वो मुसलमानों के हाथ में आए और वहाँ पर दोबारा से इस्लामिक एक्टिविटीज शुरू हों.
What did Faisal do for the Arabs in their war against Israel? उन्होंने अरब्स के लिए ऐसा क्या खास काम किया था जब उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट की? किंग फैसल मेड every possible effort to get back the Arab territories. जो अरब टेरिटरीज थी उनको वापस लाने के लिए जंग की गई थी और ये बहुत सक्सेसफुल रहा. When was King Faisal killed? King Faisal was killed by a wicked nephew of his on 25th March 1975. Actually, he was murdered by a skillful fabricated plan. किंग फैसल को एक बहुत ज़्यादा प्लान करके मारा गया था जिसमें कि उनके नेफ्यू को इस्तेमाल किया गया. उनके नेफ्यू के थ्रू उनको जो है वो किल करवाया गया था. इट वाज अ फैब्रिकेटेड प्लान. हाउ डिड द मुस्लिम्स फील ओवर हिज डेथ? The Muslims felt deep sorrow over his death. Pakistan, now in his death, as one of their family member had died. पूरी दुनिया में उनकी मौत पर बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया गया है. पाकिस्तान में खास तौर पर ऐसा महसूस होता था जैसे कि उनके हमारे खानदान का कुछ शख्स चला गया. His name shall be written in the letters of gold and will be remembered forever. उनका नाम हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा और हमेशा याद रखा जाएगा. Okay, children, this was all in all about the exercise. This was all in all about the exercise. I have explained to each and everything through the chapter. That's why I am not spent much time on explaining the exercise. My expectations from you is that you are supposed to go through the chapter once again and find out the answers of the questions by yourselves. Of course, the answers will be as similar as I have written, but if you find out by yourself, that will be a much help to make them memorize. जब आप खुद से चीज़ों को करना शुरू करते हैं तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आंसर आप खुद कॉम्प्रीहेंड करके निकालें चैप्टर में से. ठीक है. Once you find out the answers or you will be having the sample from my content, you are supposed to learn the questions. Last week मैं आपको quiz नहीं दे सकी थी, but this week I'm going to cover the quiz और King Faisal से होगा and इसके सारे question and answers, that is 10, you are supposed to learn. Okay, any question from your side, anything which you do not understand? कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो आप पूछना चाहते हो? No, ma'am. Okay, Hashim. Fine. आई होप जो लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है आप उनको कम्युनिकेट कर दीजिएगा. आई हैव सेंट PPTs on WhatsApp also. You can talk to me anytime and stay happy बेटा. Good luck for a week ahead. लेकिन मैं ये चाहूँगी कि अपनी स्टडीज को जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना होने दिया. अपना ये लर्न कर लीजिएगा क्वेश्चन और आंसर सेशन. Anything, any problem, any query, my number is with you. You can WhatsApp me anytime. Okay, I'm concluding the session. Thank you and Allah Hafiz. Bye.